So now we are starting with phase 2, that is descriptive paper. So as you know, in phase 2 there will be two paper. One will be your descriptive, that will be for economics, and the other will be the language. So phase 2 descriptive type paper. So in that descriptive type paper, first of all we can explain the content, although there is no defined syllabus, but according to the question format. Last year there was two section in question paper, section A and section B. Section B was more related to the Indian economy. Second section was more related to the Indian economy. And first section we can say that it is still related to the core economics, that is micro, macro, growth and development, international economics. So the overall basic economics, which includes mainly growth and development, we find one or two question. Then from international economics we find one or two question. Then even from micro exchange, that is general economic section, there was one numerical. So assuming that if the format remains same, that you will be getting two section, you have to attempt two question at least from both section, and for the fifth question you are free to choose from any section. So you have to attempt any 5 question, and there will be 5 question in section A, 5 question in section B, and you have to choose at least 2 question from both the section. So first of all I will explain basically the content part. In the Indian economy section, the one important section will be the public finance. One important section will be the public finance. Now related to public finance topic, questions like finance commission recommendation. So 15th finance commission recommendation, how it is different from the 14th finance commission recommendation. Then ट्रेंड्स इन दी टैक्स, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में ट्रेंड क्या रहा है, जीडीपी के परसेंटेज में क्या उसका ट्रेंड रहा है, तो वो आप इकोनॉमिक सर्विस से बेसिकली उसको सप्लीमेंट करके लिख सकते हैं. प्लस इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी, इश्यूज इन्वॉल्व इन द जीएसटी. सो देयर यू विल गेट वन और टू पार्ट फ्रॉम द इंडियन पब्लिक फाइनेंस सेक्शन. एंड इन दिस इंडियन पब्लिक फाइनेंस सेक्शन ऑल्सो वी विल बी कवरिंग द मॉनेटरी मैनेजमेंट, and related to that will be the banking sector, monetary management and banking sector. So monetary response, now that monetary response could be, the question could be in the form of say COVID-19 pandemic को के impact को mitigate करने के लिए what were the monetary response taken, overall response taken. Obviously there were fiscal measures, monetary measures, structural reform measures. Now if the question is very specific and it is asking for the monetary response, so what were the monetary response to reduce the impact of COVID-19 pandemic on the Indian economy. Banking, the questions related to the banking reform committee. So banking reform committee, that means Narasimhan committee 1, Narasimhan committee 2, merger of banks. So those questions you can expect in the banking sector. And questions related to NPAs. So expect one or two questions from this monetary management part as well. And as far as Indian economy's related part is concerned, there will be some current related topic. Current related topic will mainly include questions on any particular program. Now if question is basically on any particular program, so if question will be on any particular program, like say question is on Manrega, how Manrega is basically helping in asset creation, और रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ जॉब, तो कुछ सर्टेन टॉपिक बेसिकली यहाँ पे लेस कर लेंगे जो करंट में मतलब लाइव टॉपिक होंगे वो. सो एक्सपेक्ट वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस, वन और टू फ्रॉम मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड वन और टू फ्रॉम द करंट टॉपिक. एंड यूजुअली दैट लास्ट क्वेश्चन इज बेसिकली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी, लेट अस से 3 or 4. सो इन दैट शॉर्ट नोट्स यू विल फाइंड मल्टीपल वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. टेंस ऑफ टैक्सेस वगैरह पूछे गए, फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन रेगुलरली आ रहा है. सो टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट वी कैन प्रेडिक्ट द एरियाज, वी कैन predict this subtopic related to that. And in the
First section, basically the growth and development section. Obviously, this is a very wide topic. There are multiple growth models, but if I say if you are able to cover around 10 or 12 topic, 10 or 12 growth models, then out of that 10 or 12 growth models, you will get 2. ये 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. एंड लाइक क्वेश्चंस लाइक लुइस मॉडल, तो लुइस मॉडल के क्वेश्चन आ रखा है, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का क्वेश्चन आ रखा है, लिविंगस्टन थ्योरी. सो सिमिलरली नाउ यू कैन एक्सपेक्ट लेटर से डिपेंडेंसी मॉडल आ गया क्वेश्चन में, ये हैरिस-टोडेरो मॉडल क्वेश्चन में आ गया, सोलो मॉडल के क्वेश्चन फेज 1 फेज 2 दोनों में है, रोमन मॉडल का क्वेश्चन आ गया, देन रोमन मॉडल के बाद एके मॉडल का क्वेश्चन आ गया, एंडोजेनस ग्रोथ मॉडल हो गया, एक्सोजेनस ग्रोथ मॉडल हो गया. तो जितने भी ग्रोथ मॉडल्स है अगर आप उसको कंप्लीटली कवर कर लेते हैं देन 2 क्वेश्चन एटलीस्ट ग्रोथ मॉडल वाले सेक्शन से है. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, मेनली द क्वेश्चंस ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट. मंडल फ्लेमिंग के क्वेश्चन रिपीटेडली आए हुए हैं. एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसका जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट करने के लिए जो अप्रोचेज है लाइक एब्जॉर्प्शन अप्रोच, इलास्टिसिटी अप्रोच एंड एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, वैसे क्वेश्चन को बेसिकली प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो द पर्पसेस ऑफ बेसिकली दिस इंटरनेशनल पार्ट विल बी टू कवर दोज टॉपिक्स and other part will be apart from these 2 we can cover some part in the micro, but micro वाला part phase 1 के अंदर ही ज़्यादा elaborated है, मतलब एक्सचेंज वगैरह के न्यूमेरिकल भी वहाँ पे covered है. सो बट बिकॉज ये कुछ ओवरलैपिंग भी है, मतलब जो फेज़ 1 के अंदर भी इतना वाटर टाइप का पार्ट पे नहीं है कि ये फेज़ 1 में आ गया तो फेज़ 2 में नहीं आएगा. एक्शन का क्वेश्चन आपको वहाँ में मिलेगा, यहाँ में मिलेगा. सोलो मॉडल के क्वेश्चन फेज़ 1 में भी हो सकते हैं, बट फेज़ 2 का क्वेश्चन का नेचर डिफरेंट होगा, ये डिस्क्रिप्टिव है. सो फॉर एग्जांपल सपोज क्वेश्चन नेचर इज दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट, तो वो सोलो मॉडल के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है. तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक और इंटरनेशनल टॉपिक अगर कवर कर लें तो फिर आपका ये फर्स्ट सेक्शन के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट 2. तो ऐसे 2 क्वेश्चन आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मिलेंगे. तो अगर आपने 10-12 मॉडल कर रखा है तो 2 क्वेश्चन तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही हो जाता है. चलो मान के चलते हैं कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नया आ गया, डिफरेंट आ गया, एटलीस्ट 1 वो तो कन्फर्म है. सिमिलरली एटलीस्ट 1 फ्रॉम द इंटरनेशनल वो कन्फर्म है. सो इवन इफ यू डू नॉट अटेम्प्ट दैट न्यूमेरिकल ऑफ एक्सचेंज, even then you are able to attempt 2 question here. And from public finance you will necessarily get 1, from monetary management and banking you will necessarily get 1. तो इस फॉर्म के फिर करंट में अगेन थोड़ा सा रिस्क होता है इन द सेंस से आपने जितने भी कवर किए हुए उसमें से कोई नया क्वेश्चन आ गया, बट स्टिल यू हैव प्लेंटी ऑफ चॉइस. सो योर स्कोर विल नॉट डिपेंड अपॉन हाउ मच यू हैव रेड और प्रिपेयर्ड. स्कोर विल अल्टीमेटली इट विल बी डिटरमाइंड बाय हाउ एग्जैक्टली यू आर राइटिंग. तो हमने ज़्यादा प्रिपेयर किया था, हो सकता है भाई आप टू चूज़, मतलब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, बट किसी क्वेश्चन को जो आप लिख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मान लो ये लिखा है, तो हाउ एग्जैक्टली यू राइट. सो आउट ऑफ 20 हाउ यू कैन गेट 13 और 14, दैट इज अ चैलेंज. सो टू गेट दैट 13 and 14 द आंसर मस्ट बी वेरी एग्जैक्ट एंड इट मस्ट बी इलेबोरेटेड. ठीक है. वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, पेपर का नाम ही डिस्क्रिप्टिव है, descriptive type answer. That means it is basically an essay type answer that you have to present. Essay type answer basically present करना. So I will be basically starting with this growth and development section first, and then we'll move to the other section. तो कुछ क्लासेज जो फेज़ 2 की है वो आपके फेज़ 1 के एग्जामिनेशन से पहले होगी, और थोड़ी बहुत क्लास जो करंट टॉपिक वाले होंगे या अदर टॉपिक होंगे वो फेज़ 1 के एग्जाम के बाद में कंडक्ट हो जाएंगे. ठीक है. So for phase 2 we have some time after phase 1 also. Do one thing first. Growth and development. ठीक है. कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए एक ब्रॉडर टॉपिक बना लेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. And within that growth and development just make a list of topics or list of models. We can start with solo model, but within solo model there will be various subtopics.
like steady state, level of capital. What is the significance of steady state level of capital? Then golden rule, steady state capital. So how golden rule is different from that steady state. Then effect of savings or effect of technology or effect of population growth rate, effect of savings, technology, population growth rate on steady state. Out of these, which factor is causing a level effect and which factor is causing a growth effect? So what is the level effect and what is growth effect? You must be knowing it, that. एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं, विच इज कन्वर्जेंस. तो सोलो मॉडल के कोर पे बेसिकली एट द कोर ऑफ सोलो मॉडल इज द आइडिया ऑफ कन्वर्जेंस, एंड द कन्वर्जेंस आल्सो हैज कंडीशनल एंड अनकंडीशनल पार्ट. तो कुछ बेसिक पॉइंट बेसिकली आपको यहाँ पे लिखने हैं. अब द नेचर ऑफ क्लास विल नॉट बी दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, एंड बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट है आपके लिए. तो कुछ चीज़ें मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसका, एंड दैट विल बी सपोर्टेड बाय द नोट्स. दैट मीन्स वो डिटेल नोट्स फिर आपको मिल जाएगा. मैं क्लास में उस पॉइंट को बेसिकली एक्सप्लेन करता जाऊँगा. जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होगा, जो कोर है वो तो एक्सप्लेन करेंगे, क्लास के अंदर डिक्टेट करेंगे. एंड समथिंग जो वी कैन से लेस इंपॉर्टेंट है बट रूल आउट भी नहीं कर सकते उसको, तो वो कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देंगे और नोट्स अवेलेबल होगा. जस्ट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रीड दैट. सो वी कैन स्टार्ट विद द सोलो मॉडल फर्स्ट, एंड देन Harrod-Domer model. After that, remember these models are basically based upon capital accumulation. ये capital accumulation based model है. That means their main argument is economic growth is a process of accumulating more capital, and capital accumulation is nothing but investment. Investment refers to what? Investment refers to addition to the stock of capital asset over a period of time, and that is capital accumulation. So economic growth is an outcome of accumulating more and more capital. So solo model, then Harrod-Domer model. After that we can divide or we can differentiate exogenous growth model from the endogenous growth model. Solo model is considered to be an exogenous growth model. Similarly, Harrod-Domer model is also a part of exogenous growth model. Exogenous means they will say that growth, the argument will be that growth is a function of certain factor. Growth is a function of saving rate, growth is a function of population growth rate, growth is a function of technical progress growth rate, but they will not explain what determines saving rate, they will not explain what determines population growth rate, they will not explain what determines technical progress growth rate. They will simply assume that there is a given saving rate. Let us say saving rate is 30%, but why 30%? Why not less? Why not more? They will simply assume that technology is progressing at a rate of 5%, but what determines the technical progress? Not explained in the model. In that sense, they are example of exogenous growth model. So from exogenous growth model, then you will have to move to the endogenous growth model. Endogenous growth model will explain that growth depends upon, say, technical progress growth rate. Then they will go on to further explain that technical progress growth rate in turn depends upon how much percentage of population going to research sector, what is productivity of that research, whether research is duplicated or not. So those things will be included in the model. So popular among that endogenous growth model will be the Romer model. Popular among them will be the Romer model. So Romer model का एक question you can anticipate, ये expect कर सकते हो Romer model में. Then AK model is also there. That is also an example of endogenous growth model. You can add here human capital, the role of human capital, because solo model in fact ignored human capital. Solo model argument कहता है कि economic growth is a process of accumulating capital, but which capital? Human, it is physical capital, plant, machinery.
but growth also depends upon human capital. So that human capital and growth will be explained in a separate model. So these will be the endogenous growth model. The endogenous growth model. Above is exogenous growth model, and this will be the endogenous growth model. Up to this is basically we can say that we are referring to the capital and technology. But there are certain growth model which focuses on the mobility of labor, movement of labor from traditional sector to the modern sector, from urban area, rural area to the urban area. So those models focusing on the movement of labor, most important out of that will be the लुइस मॉडल. ये पास पेपर में भी आ रखा है डिस्क्रिप्टिव में. तो लुइस मॉडल के भी although there are different aspects, so we'll be explain all the aspect of the Lewis model. So it is an structural change theory of development. That means during the course of development, the structure of economy will change from predominantly agrarian economy to industry based economy. That means labor, and along with that labor will also move from rural area to the urban area. So how that labor mobility will occur, whether Lewis model is strictly a capital driven model, what are the limitation of that model, what is unlimited supply of labor concept here. तो लुइस मॉडल को बेसिकली यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना है. एंड तो ये क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिल रहा है, मतलब पास पेपर के अंदर है. Related to that is Harris-Todaro model. So it is rural urban migration theory, classical rural urban migration theory. So these two we can club based upon, we can say, labor, movement of labor. Clear? And then we can another important question is balanced versus unbalanced growth strategy. Balance versus unbalanced growth. So ये दो alternate approach है. One says in order to have economic growth, we need to have growth in all the sectors simultaneously. So there must be a harmony between all the sectors. But to have harmony between all the sectors, we need a huge amount of investment. You cannot invest in all the sectors together because of scarcity of resource. So that is the important drawback of balance, which will be overcome by the unbalance. तो इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है. बिग पुश थ्योरी बेसिकली यहाँ पे आ जाएगी, नेस की थ्योरी आ जाएगी, अनबैलेंस ग्रोथ अप्रोच के अंदर हर्शमैन की थ्योरी है. तो ये अलग अलग जो ग्रोथ मॉडल है, डिफरेंट कंसेप्ट जो गिवन है, उसको डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन करना है पहले. देन अनदर क्वेश्चन इज क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट गिवन बाय लेविंस्टन. तो ये भी पास पेपर में आई थिंक 16 या 17 का पेपर जो अवेलेबल है, उसमें मतलब सारे ईयर के अवेलेबल नहीं, बट कुछ ईयर के क्वेश्चन पेपर फेज 2 वाले अवेलेबल है. तो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट का एक क्वेश्चन आया हुआ है. एंड द मेन आइडिया, दैट मीन्स रिमेंबर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू एक्सप्लेन मेन आइडिया फर्स्ट. ट्राई टू यूज जितने भी टेक्निकल वर्ड लेविंस्टन ने यूज़ किए थे, वो हमें अपनी थ्योरी नहीं बतानी, अपने लैंग्वेज कम यूज़ करने. लैंग्वेज आपको यूज़ करना बुक का या जो मॉडल ने दे रखा है उसके कोर कंसेप्ट को यूज़ करना. सो क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, द मेन कोर आइडिया इज दैट in order to have an impact, in order to have a sustained growth, economy must reach a critical threshold, you can say. Beyond, if effort is less than that threshold, economy will not take off. You have to apply a big push. So the idea of big push here and critical minimum effort similar concept हो जाता है. Just like a plane, that in order to have a take off, it require a critical thrust. उस क्रिटिकल थ्रस्ट से कम अगर फोर्स अप्लाई करें तो देन प्लेन विल नॉट टेक ऑफ. सो सिमिलरली फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो. तो इस ये कंसेप्ट आपको, बट रिमेंबर ये सारे क्वेश्चन आप 20 मार्क्स में लिख रहे हैं. तो 20 मार्क्स का मतलब हो गया अराउंड 250-300 वर्ड्स होना चाहिए आपके पास लिखने को. दैट मीन्स इलेबोरेशन है, 10-12 पैराग्राफ लिख रहे हैं, शॉर्ट एटलीस्ट. तो आइडिया होना तो वो तो आइडिया तो फिर एक पैराग्राफ के अंदर खत्म हो जाएगा, इसका इलेबोरेशन चाहिए. तो द नेचर ऑफ पेपर इज डिस्क्रिप्टिव, सो यू हैव टू इलेबोरेट.
इलाबोरेट करने के लिए आपको नोट्स के फॉर्म में मिलेंगे कि कितना इलाबोरेशन है, और कुछ क्लास के अंदर भी सप्लीमेंट करेंगे. देन अदर इज मेडल थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉर्डेशन, जो ये भी एक्सप्लेन करेगा कि कॉम्युनिटी डेवलपमेंट में कैसे इनइक्वालिटी चेंज होती है. व्हाट इज बैकवॉश इफेक्ट, व्हाट इज स्प्रेड इफेक्ट. If backwash effect is more, then inequality will increase. If backwash effect is less, inequality will reduce. तो मेडल थ्योरी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है. देन यू कैन ऐड ऑन डिपेंडेंसी मॉडल. तो डिपेंडेंसी मॉडल का मतलब है जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं और डेवलप कंट्रीज हैं. So the development of less developed countries is contingent upon the growth of developed countries. The development of developed countries is not depending upon LDCs, but the development of LDCs depend upon the growth of developed countries. So they are dependent upon. So they are dependent in terms of capital, dependent in terms of technology, dependent in terms of export and import as well. So the dependency model, but again I said you have to elaborate it. तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सब मेयर आइडियाज है, उसका इलेबोरेशन रिक्वायर्ड है. सो नए क्वेश्चन में आप डिपेंडेंसी मॉडल के क्वेश्चन को यहाँ पे ऐड कर सकते हो. और रोस्टो थ्योरी वगैरह ओल्ड थ्योरीज, आई थिंक यहाँ तक का मॉडल अगर आपने एक्सप्लेन कर लिया, इसमें ऐड ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सेक्शन में ही वी कैन ऐड एच डी आई उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, जैसे इनइक्वालिटी एडजस्टेड एसडीआई या जेंडर डिस्पैरिटी रिलेटेड पॉवर्टी इंडेक्स भी होते हैं. तो एचडीआर के रिपोर्ट में जितने भी इंडेक्स नए आ गए वो रिसेंट वाले टॉपिक में भी आप ले सकते हो, इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन में, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ले सकते हो. तो दीज आर द इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो आई थिंक यहाँ तक का जो अप्रोच होगा उसमें आप अराउंड वी कैन से मॉडल के टर्म में 1 2 3 4 5 6 और 6 अराउंड हेयर. तो अराउंड 10-12 जो टॉपिक है अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो आई थिंक 2 क्वेश्चन आपको पेपर 2 के अंदर मिल जाना चाहिए. और अगर इंटरनेशनल का क्वेश्चन नहीं, अगर पेपर 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 क्वेश्चन मिल गए तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपको सेक्शन में अटेम्प्ट करना, यू कैन अटेम्प्ट इट. क्लियर. तो यहाँ तक आपका ये नीड है. एज फार एज सोर्स इज कंसर्न, सोर्स थोड़ी बहुत वेरी करेंगे. लाइक कुछ जो बाद वाले मैंने टॉपिक लिख रखे हैं, डिपेंडेंसी मॉडल, लिमिट्स टू लिविंगस्टन मॉडल, ये सेकंड वाले सेक्शन के लिए तो आई थिंक इजी बुक अगर रीड करनी है तो फिर एमएल जिंगन, उसमें ऑलमोस्ट सारे मॉडल मिल जाते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक है जो वहाँ नहीं मिल रहे हैं. लाइक रोमर मॉडल है, तो रोमर मॉडल का डिस्क्रिप्शन वहाँ नहीं है. तो फॉर दैट पर्पज सेपरेट सोर्स में बता दूंगा. रोमर मॉडल के लिए आप जोन्स की बुक करोगे, सिर्फ एक चैप्टर पढ़ना, उसमें चैप्टर नंबर 5 एलिमेंट्स ऑफ रोमर मॉडल. सिमिलरली सोलो मॉडल के लिए बेटर रीडिंग इज यू कैन रीड देवराज ऑल्सो एंड यू कैन रीड मैनक्यू ऑल्सो. मैनक्यू चैप्टर नंबर 7 and 8 and देवराज आई थिंक चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर हेड रोमर एज वेल. रोमर मॉडल के लिए जोन्स, ठीक है. तो ये बुक जो बोल रहा है डज नॉट मीन कि यू हैव टू परचेज इट एंड बाय इट. ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो क्लास का नोट्स होगा, जो नोट्स अपलोड किए जाएंगे वो उसी सोर्स से अपलोड किए जाएंगे. आई एम जस्ट रिवीलिंग माई सोर्स कि ये सोर्सेज यहाँ से है, सो दैट इफ यू वांट टू रीड यू कैन रेफर टू दैट बुक. क्लियर. सो वी हैव टू कवर दीज डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स. So we can start with the first one is a solo model. Before explaining this model, just focus on one thing. If I say growth, then what is the indicator of growth? How we will judge whether economy is growing or not? So one indicator of growth is growth in what? GDP. So India's growth rate is, you say, that means it is growth rate of GDP. But GDP as an indicator of growth has a limitation.
Suppose GDP doubles, along with that population also doubles, then you will say that GDP per capita remains same, standard of living is not improving. So GDP is not a good indicator of growth. As compared to GDP, the better indicator will be GDP per capita. GDP को y से डिनोट कर दिया और GDP पर कैपिटा स्मॉल y से. स्मॉल y इज कैपिटल Y अपॉन L. L यहाँ पॉपुलेशन को या लेबर फोर्स को स्टैंड कर रहा है. जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी consider that population is basically labor, although entire population is never labor force. So there are two indicators of growth. One is GDP, other is GDP per capita, and out of these two, GDP per capita is a better indicator as compared to GDP. Now in any model, remember each model will be highlighting one important dimension of growth. Growth is a very complex phenomenon. That means growth depends upon various factors. Now if you try to consider all factors in one model, the model will become very complex. So you choose one factor, keeping other factor constant. So this model is basically trying to explain economic growth, and this model we can say is designed to explain how capital, labor force and technology interact and how their interaction will determine GDP and accordingly the growth rate of GDP. So I repeat, the main idea of the growth model is, or this model is basically designed to explain what? How capital, labor force and technology, they interact and how that interaction will determine GDP and accordingly the growth rate of that GDP. Now when you are stating, you have to state that sentence or statement, but that statement can be expressed in terms of equation, because modeling basically equation के form में होगी. So this Y is GDP, you express GDP as a function of capital and labor. Obviously GDP does not depend only on capital and labor, but you are highlighting these two factors. And then we express this production function in terms of Cobb-Douglas production function as A capital to the power alpha, labor to the power 1 minus alpha. A capital to the power alpha, labor to the power 1 minus alpha. Now from this equation it follows that if I say that Y is GDP, so I am exactly saying that GDP depends on three factors, A, K and L, where A stands for here technology, K is a capital stock and L is labor force. Technology, capital and labor force. Technology, capital and labor force. So GDP depends upon capital, labor and technology. So if there will be change in labor or change in capital or change in technology, then there will be change in the GDP. So GDP basically depends upon, or it is determined by interaction between technology, capital, labor force. Clear? But better indicator of GDP growth is basically GDP per capita. So if you want to convert that equation in terms of per capita, then Y will be equal to capital A capital to the power alpha, labor to the power 1 minus alpha. इसे लेबर से डिवाइड कर दिया, L से डिवाइड कर दिया. So this Y by L will be GDP per capita, and this will become A K by L to the power alpha. K by L to the power alpha. So capital upon labor will be called as capital per capita. जैसे Y by L को क्या बोल रहे हैं? Output per capita. Similarly, K by L is capital per capita. So small y is equal to A small k to the power alpha. A small k to the power alpha. Clear? Another important point in the Solo model is that it is based upon constant returns to scale. Solo model assumes constant returns to scale. Constant returns to scale means if you increase capital and labor by a given proportion, then output will change in the same proportion. So it is assuming constant returns to scale. But when you say that it is based upon constant returns to scale, we are simply assuming that technology is constant. एक given technology पे वो returns to scale constant है.
Solo model is based upon constant returns to scale. Now how to explain this model, मतलब इसे ग्रोथ एक्सप्लेन करना है मुझे, तो ग्रोथ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो इंडिकेटर बना लिए. अब टू एक्सप्लेन दिस इट फर्दर और डू वन थिंग साइमल्टेनियसली. यू कैन सपोज क्वेश्चन आता है सोलो मॉडल का, कोई भी क्वेश्चन हो XYZ, वट एवर बी द स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन द मेन आइडिया. So what is the main idea? Just write down in the first paragraph. Main idea of the Solo model. Solo model is designed to show. Solo model is designed to show how growth in capital stock, growth in labor force, and advances in technology interact in an economy and how they affect total output of goods and services. How they affect total output of goods and services of an economy. क्लियर. तो ये लाइन आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन, ये फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस आप ऐसे लिख देंगे. इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. टू कैपिटल. Which means as the stock of capital will increase, marginal productivity of capital will decrease. As stock of capital will increase, marginal productivity of capital will decrease. देखो मॉडल को बिल्ड, रिमेंबर ये जो लिखा है इसमें कंफ्यूजन नहीं करना. मैंने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोला और अभी बोला डिमिनिशिंग रिटर्न, बट दैट वाज डिमिनिशिंग रिटर्न टू कैपिटल. दैट मींस यू चेंज ओनली वन फैक्टर, दैट इज कैपिटल. और रिटर्न्स टू स्केल कहेंगे तो कैपिटल और लेबर दोनों को चेंज करना. सो व्हेन यू एक्सप्लेन दिस, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में आपका ये मेन आइडिया आ जाएगा. फिर मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, जो बेसिक मॉडल है उसे एक्सप्लेन करने के लिए आप y एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर लिया है और क्या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है ये. तो इसका मतलब हो गया कि इफ़ यू इंक्रीज कैपिटल एंड लेबर बाय सपोज z टाइम्स zk zl, then output will also increase by z times. Now if I consider z as 1 by l, then you can write this equation as y by l function of k by l comma 1. Y by l is small y and k by l is small k, one constant number. Clear? So when you present it in terms of graph, then you write here k and you write here y. Due to diminishing return, slope will be reducing. So y as a function of k लिख रहे हैं. Just for example, suppose if I say y is equal to under root k, ठीक है, तो y equal to under root k लिख रहे हैं. इसका मतलब क्या हो गया? If capital is taken as 100, so if capital is taken as 100, then output will be 10. If you double capital from 100 to 200, then output will not double. So it is based upon diminishing return. So this y is a function of k. y as a function of k है. तो पहले तो ये प्रोडक्शन फंक्शन याद रखना है. प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्म क्या होगा? प्रोडक्शन फंक्शन के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल इज बेसिकली द कंसेप्ट दैट जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम का मतलब ये एक्चुअल में हमारा सप्लाई साइड है. मतलब मॉडल के बेसिकली दो साइड हो जाएंगे. दिस इज बेसिकली सप्लाई, दैट मीन्स हाउ मच विल बी द प्रोडक्शन. व्हेन यू मूव टू द डिमांड साइड, तो मैक्रो में डिमांड
y इक्वल टू AD भी लिखते हैं, और AD की जगह क्या लिखते हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. But since we have converted the supply side in terms of per capita, so we have to convert this demand also in terms of per capita, and to convert in terms of per capita you divide it by L, then you write small y equal to small c plus small I. That means this is output per worker which is equal to consumption per worker plus investment per worker, consumption per worker plus investment per worker. So this is basically the demand side. अब डिमांड साइड को एक्सप्लेन करने के लिए वी से दैट व्हाट एवर इज विल बी द इनकम, अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड एंड अ पार्ट ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन. तो सपोज S is the rate of saving, S is basically the rate of saving. So how much will be the overall saving? Suppose this S is 30%, small s की वैल्यू 0.3 है, तो 0.3 into y करेंगे, that will be the overall saving. So saving amount will be small s into y, small s into y, and remaining proportion, that is 1 minus s, will be spent on consumption. So that will be 1 minus s into y. Clear? 1 minus s into y. So small y is equal to c plus I. In place of c what you can write? Remember ये consumption है, और consumption की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 minus s into y. So in place of that c you can write 1 minus s into y plus I. ठीक है. So y is equal to y minus sy plus I. ये y cancel out हो गया. So small sy is equal to I. What does this mean? What is this I? ये इन्वेस्टमेंट पर वर्कर है. And what is small s into y? Small s तो rate of saving है. Small s into y will be the amount of saving. So saving is equal to investment. So in a two sector model it is correct. Saving is equal to investment. So whenever you have to draw investment line, you can draw the saving line. And in place of y what you can write? Y is a function of k. वो supply side से आ जाएगा. So y as a function of k, so you write basically equation as this. Clear? So when you draw this in the graph, then initial part was your production function. This was y as a function of k, and small sy will be, because smallest fraction में है, so it will translate downward. So this will be your saving line. You can read it as investment line as well, and this is your production line. So at any given stock of capital, if I say how much is the production, then you will say that since production depends upon capital, production is a function of capital per worker. So if capital stock is K1, then output produced by that capital will be determined by the production function. So this will be the output. Now out of that output, how much has been saved and how much has been consumed? Out of that output, saving is determined from the saving curve, income is determined from the supply side. So this gap is what? This gap is saving, so remaining gap is consumption. So that gap is basically stands for consumption. ये amount consumption के लिए. Clear? अब इस टेबल पे आपको ये सब आपने वैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको कर रखा है, बट एग्जामिनेशन में आपको ये समझाना नहीं है. वी आर यूजिंग दिस टू एक्सप्लेन समथिंग एल्स. ये इंट्रोडक्शन था, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वाई विल बी यूजिंग सेविंग लाइन, इन्वेस्टमेंट लाइन कौन सी हो रही है, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर आंसर नाउ. दैट मीन्स यू आर सिंपली यूजिंग इट. आपको ये यूज करना है, मेन आइडिया एक्सप्लेन कर देना, बिकॉज द नेचर ऑफ क्वेश्चन विल बी टू एक्सप्लेन द गोल्डन रूल स्टडी स्टेट. आपको सीधा गोल्डन रूल समझाना है, तो आप इतना बेसिक नहीं समझाओगे. आप जो नीड होगा वो आपको दूसरा है, या फिर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं लेवल इफेक्ट, ग्रोथ इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सेविंग ऑन ग्रोथ. तो फॉर दैट पर्पस यू विल हैव टू सिंपली यूज इट. सो यू मस्ट एट लीस्ट नो व्हाट इज द स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, हाउ इट इज बीइंग डिटरमाइंड, क्या स्टेडी स्टेट पे कोई ग्रोथ होता है,
अगर ग्रोथ होता है तो किस फैक्टर की वजह से होता है, वो सारी चीज़ें इस मॉडल के पार्ट में। और जब इलेबोरेट करना है तो सब कुछ इलेबोरेट करना है, ये नहीं कि क्वेश्चन में नहीं पूछा था इसलिए हमने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। सपोज क्वेश्चन है स्टेडी स्टेट पे, अब आपने स्टेडी स्टेट लिखा और वो आपको 100 वर्ड्स में लगा कि ये तो ओवर हो गया मेरा, बट वहाँ तो आंसर 20 मार्क्स का था। तो ऑल दो क्वेश्चन वॉज नॉट ऑन गोल्डन और स्टेडी स्टेट, बट क्वेश्चन वॉज ऑन स्टेडी स्टेट, तो आपने स्टेडी स्टेट बता दिया, फिर आप कह सकते हैं देयर इज अ यूनिक स्टेडी स्टेट ऑल्सो विच इज नोन एज golden steady state where consumption per worker needs to be maximized. So you are always free to elaborate. Descriptive means you are free, freedom दिया जा रहा है कि you can compare it with some other concept. कि सोलर मॉडल लिख दिया, फिर हम उसका लिमिटेशन बता देंगे कि this model, although this model is explaining growth, but it has certain limitation. It is an example of exogenous growth model. It is not explaining how technological growth rate is determined. It is simply assuming that technical progress growth rate is given number. This problem is overcome in the endogenous growth model like Romer model. तो elaboration करने का मैं सिर्फ टूल बता रहा हूँ कि how you can elaborate an answer. मतलब आप किसी टॉपिक पे अगर ऐसे फॉर्म में लिख रहे हैं तो elaboration required है। तो sometimes some students के साथ ये प्रॉब्लम रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया उनको लगता है कि जैसे जो पूछा जा रहा है मुझे उतना ही बोलना है, जो नहीं, बट you are always free to compare one concept with the other concept. तो यहाँ तक बेसिकली वो आप कह सकते हैं कि वो टूल हो गया, और आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लेन द स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल, स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल। Just to explain, suppose at any given point of time there is a stock of capital, say in 2022. So I said small k is capital K upon L, capital K upon L। मॉडल को बिल्ड करते समय अलग अलग स्टेप आप ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियली आई कैन से ओनली कैपिटल इज वेरिएबल, टेक्नोलॉजी, लेबर फोर्स बोथ आर कांस्टेंट। सेकेंड स्टेप में वी कैन मेक लेबर ऑल्सो वेरिएबल, थर्ड स्टेप में वी कैन मेक इवन टेक्नोलॉजी एज वेरिएबल। बट जो फंक्शन लिखा गया वाई एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर और ए कैपिटल टू द पावर अल्फा लेबर टू द पावर 1 माइनस अल्फा, इनिशियली ये टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है और लेबर भी कांस्टेंट है। सो ओनली वेरिएबल इज, so if you are determining capital stock of 2022, then this is stock of capital in 2022, labor force of 2022, and we are interested in knowing what will be the stock of capital in 2023, तभी तो change निकलेगा। Now if this labor is constant, तो if this labor is constant मतलब denominator constant है, तो फिर जो भी चेंज आएगा वो उसका एग्रीगेट स्टॉक ऑफ कैपिटल की वजह से आएगा। नाउ दिस स्टॉक ऑफ कैपिटल हियर बेसिकली मींस प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। सो इफ यू आर बाइंग सम न्यू प्लांट एंड मशीन एंड इक्विपमेंट, देन द स्टॉक विल इंक्रीज, बट परचेज ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। सो ड्यू टू इन्वेस्टमेंट स्टॉक विल increase, so it will increase due to investment. Investment is equal to saving, and saving is small s y. So by this amount stock will rise, but since during the production process we use plant and machinery, so its value will also depreciate. So stock of capital will decrease because of depreciation. But depreciation is not that all capital will depreciate in 1 year. Depreciation will be at a certain rate. Suppose 10% of stock of capital depreciate. So 10% I write it as a delta into K. So depreciation amount will is delta K. Stock is increasing by this amount, decreasing by this amount. So if you want to calculate the change in stock of capital, then that change can be calculated by, you can calculate that change by simply saying investment minus depreciation. Clear? By this amount stock will increase, by this amount stock will decrease. So the change will be equal to small s y minus delta K. Clear? Now if investment is more
and depreciation is less, then the stock will increase. If depreciation is more and investment is less, then stock will fall. But if both are equal, then stock is neither increasing nor it is declining, and that state of capital is called as steady state. Therefore, at steady state, change in capital per worker will be equal to 0. Change in capital per worker will be equal to 0 because investment is exactly equal to depreciation. So delta K will be equal to 0. Clear? In place of that delta K, you can write this value. Small s y minus delta K इक्वल टू 0, और जब 0 से इक्वेट करेंगे तो k की जगह स्टार लगा दीजिएगा. स्टार का मतलब अब आप एक यूनिक वैल्यू को रेफर कर रहे हैं विच इज नोन एज स्टेडी स्टेट, एंड इन प्लेस ऑफ y यू कैन ऑल्सो राइट फंक्शन ऑफ k. क्लियर? ये इक्वेट कर देना 0 से, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको बेसिकली k की वैल्यू मिल जाएगी. मतलब डेप्रिसिएशन रेट में विल बी गिवन, सेविंग रेट विल बी गिवन, फंक्शन की जगह जो फंक्शन का फॉर्म होगा वो लिख देंगे. तो स्टेडी स्टेट कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये स्टेप फॉलो करना है, एंड व्हेन यू ड्रॉ इट ग्राफिकली देन वन लाइन विल बी ऑफ saving or investment line, smallest function of k, other line for depreciation. Their equality determine steady state. Their equality determine steady state. Their equality is determining the steady state. क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको फर्दर लिखना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कंसेप्ट. इस कंसेप्ट का सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इज दैट इट इज अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी. ये इकोनॉमी का लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, इन द सेंस सपोज स्टॉक ऑफ कैपिटल इज लेस देन स्टेडी स्टेट, देन व्हाट विल हैपन? एट दिस स्टॉक ऑफ कैपिटल K1 depreciation is less, investment is more, and due to this stock of capital in subsequent period will increase. If you take any quantity to the right like K2, then investment will be less, depreciation will be more, so stock will decrease. So stock will keep on changing so that economy attains steady state. In that sense it is long run इक्विलिब्रियम. उस कंटेक्स्ट में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है इकोनॉमी का. इन दैट सेंस इट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी. सो स्टेडी स्टेट इज अ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी. अब ये पॉइंट आपने फर्दर एक्सप्लेन किया, फिर नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि क्या स्टेडी स्टेट पे कोई ग्रोथ हो रहा है. whether there is growth at a steady state. I am saying economy is at a steady state. What does that exactly it mean? Steady state पे तो change 0 लिखते हैं. Y is a function of k, but k is not changing, so y will also not change. So in fact there is no growth at a steady state. Steady state पे in fact कोई growth नहीं है. और steady state का meaning in fact ये हो गया कि अगर हमने उसको explain किया इस फॉर्म में, depreciation line, investment line, and this is the amount of steady state. If economy is at a steady state, then stock of capital for 2022 and stock of capital for year 2023 and stock of capital for year 2024 all will remain same. Now if capital is same and we are saying that GDP per capita is a function of capital per capita, तो अगर capital per capita constant है तो y भी क्या होगा? सेम रहना. If you present it in terms of graph,
by taking different year on x-axis and GDP per capita on the vertical axis. तो फिर यहाँ 2022, 2023, 2024 एवरी ईयर के लिए y की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी. सो इनफैक्ट देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ. सो देयर इज नो ग्रोथ एट स्टेडी स्टेट, बट दिस स्टेटमेंट is partly correct. Reason, we have kept various other factors constant, like technology constant, population growth constant. Population growth in fact zero, labor force we are assuming it to be constant. So at steady state there is no growth. So now question is, what will cause growth? किसकी वजह से growth होता है फिर? तो there must be some reason for growth. So now model explain what are the sources of growth. So what could be the source of growth? What could be the source? The source or reason due to which this steady state will change. So one source तो identify हो रहा है, ये saving rate है. If saving rate goes up, then suppose saving rate is initially 10%. Saving rate increases from 10% to 20%. तो ये line shift हो जाएगी. As this line will shift at same stock of capital, we say that depreciation less, investment is more. So the subsequent year stock will increase. As k will increase, y will also increase because y is a function of k. But once economy will reach the new steady state, suppose it took 3 years for economy to reach the new steady state. So from 2022 to 2025 there will be growth, but what will happen from 2025 onwards? 2025 onwards again there will be no growth. So economy will move from one level. Economy will move from one level to a different level, but once you achieve that level, then onwards there will be no further growth. So you move from one level to a higher level. So saving rate is causing a level effect but not the growth effect. और ऐसे आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो. सपोज मैं कहूँ कि ये सेविंग रेट जो S1 है 10%, दिस इज फॉर इंडिया. तो फिर ये जो y की वैल्यू होगी वो इंडियन इकोनॉमी के लिए हो गया 10% पे लिख लिया. S2 की जो वैल्यू है सपोज 20%, दिस इज फॉर चाइना. तो फिर ये ऊपर वाली वैल्यू चाइना की इकोनॉमी के लिए हो जाएगी. तो फिर ये के स्टार डबल स्टार जैसे लिखा है वो चाइनीज इकोनॉमी के लिए हो गया. तो फिर के की वैल्यू अगर हायर है तो वहाँ पे वाई की वैल्यू भी हायर होगी बिकॉज वाई इज अ फंक्शन ऑफ के. सो द लाइन विल नॉट बी सेम, द लाइन विल बी डिफरेंट ऑल्दो देयर इज नो ग्रोथ नाइदर इन इंडिया नॉर इन चाइना. ग्रोथ किसी भी कंट्री में नहीं है, बट दोनों कंट्री के जीडीपी पर कैपिटा का लेवल डिफरेंट हो गया. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज कॉल्ड लेवल इफेक्ट. लेवल इफेक्ट से क्या होता है, जो ट्रेजेक्ट्री है वो चेंज नहीं हो रही है, यू मूव फ्रॉम वन लेवल टू हायर लेवल. और अगर ग्रोथ इफेक्ट होगा तो ये जो लाइन है वो परमानेंटली हायर होता जाएगा, बट दैट विल हैपन व्हेन वी विल बी एडिंग द टेक्निकल प्रोग्रेस ग्रोथ रेट, नॉट बिफोर दैट. तो अब पॉइंट ये बनता है कि ये जो आप आइडिया ले रहे हैं इसको आप इलेबोरेट कैसे करोगे. मतलब क्वेश्चन का एक सिंपल फॉर्मेट मैंने इस क्लास में दिया कि एक्सप्लेन द स्टेडी स्टेट कंसेप्ट. अब सिंपल सा ये अगर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सोलो मॉडल, तो आप सोलो मॉडल के आइडिया से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन यूज़ करोगे. बेसिक टूल्स को बताने की जरूरत नहीं है, बट यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दिस पार्ट. ये पार्ट आपको एक्सप्लेन करना है, स्टेडी स्टेट का सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करना है, फिर उसके फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे वो ऐड करेंगे, then the answer will become complete. Clear? So you have written only the main idea. Now add some part for the steady state. Right. At any given point of time, capital stock at any given point of time, capital stock is an important factor. Capital stock is an important factor that determine output. Of an economy. Capital stock is an important factor that determine output of an economy.
but capital stock can change over time. Capital stock can change over time, and those changes can lead to economic growth. And those changes can lead to economic growth. Those changes can lead to economic growth. First, we have to explain this part initially. It means economic growth is an outcome of accumulating more capital. Economic growth is an outcome of accumulating more capital. Is an outcome of accumulating more capital. Underline that sentence. Economic growth is an outcome of accumulating more capital. So as you accumulate more capital, there will be growth, but accumulation of capital is investment, and for investment you need saving. So saving is an important factor that affects growth. Saving is an important factor which is affecting the growth. So there are various factors, but saving is most important one. Without saving we cannot invest, and without investment there will be no capital accumulation, and without capital accumulation there will be no growth. To produce more of output, you need more of machinery, you need more of capital. Next paragraph. In particular, two forces influence capital stock. In particular, two forces influence capital stock. Two forces influence capital stock, that is investment and depreciation. Investment and depreciation. So investment refers to addition to stock of capital asset, addition to stock of capital asset over a period of time, and it causes capital stock to rise. It causes capital stock to rise. On the other hand, depreciation refers to wearing out of old capital, and it causes capital stock to decline. It causes capital stock to decline. Next paragraph. At steady state, there is no change in capital stock. At steady state, there is no change in capital stock. There is no change in capital stock because investment is exactly equal to depreciation. Investment is exactly equal to depreciation. Investment is exactly equal to depreciation. So for a steady state, we can write following equation. For a steady state, we can write following equation. और इक्वेशन के फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर सकते हो आप. एट स्टेडी स्टेट डेल्टा के इक्वल टू 0, दिस एंड देन दिस. वहाँ लिख करके फिर उसका ग्राफ से प्रेजेंटेशन लिख रहे हैं आएगा. मतलब जब आप आंसर लिख रहे हैं तो कभी भी ये नहीं कि क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले वो डायग्राम ड्रॉ कर दिया. डायग्राम मस्ट कम इन बिटवीन. जहाँ आप कंसेप्ट एक्सप्लेन करें उसके बाद, मतलब यहाँ तक लिखा है, इक्वेशन लिखने के बाद फिर वो डायग्राम आना चाहिए आपके आंसर शीट में. And then add on the importance of this concept. Next paragraph में. Steady state is significant because
it represent, because it represent long run equilibrium of economy. It represent long run equilibrium of economy. Underline that sentence. It represent long run equilibrium of economy. It shows that regardless of the level of capital, regardless of the level of capital with which economy begins, regardless of the level of capital with which economy begins, that means whether economy begins with stock K1 or whether economy begins with stock K2, it will always end up at K star. Regardless of the level of capital with which economy begins, it always ends up at a steady state level. It always ends up at steady state level of capital. Steady state level of capital. Next paragraph. We must also note that at a steady state there is no growth. At a steady state there is no growth of output or output per capita. There is no growth of output or output per capita, so long as we assume that population and technology remains constant. So long as we assume that population and technology remains constant. मतलब आपने स्टेटमेंट को आपने क्वालिफाई कर दिया, क्वालिफिकेशन स्टेटमेंट का. इट इज नॉट दैट एट ए स्टेडी स्टेट देयर विल बी नो ग्रोथ. सो लॉन्ग एज वी अज्यूम दैट लेबर फोर्स एंड टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, वहां तक वो स्टेटमेंट सही है. क्लियर? तो अगर ये स्टेडी स्टेट का सिग्निफिकेंस हो गया, अब स्टेडी नाउ एट ए स्टेडी स्टेट नो ग्रोथ, सो ऑब्वियस क्वेश्चन इज what causes growth? So that growth may be caused by various factors. Among those various factors, one factor is rate of saving, another factor will be population growth rate, other factor will be the technical progress growth rate. तो एक पार्ट आप इसमें ऐड कर सकते हैं. और अगर फर्दर इसको यहाँ तक का मतलब आंसर इस फॉर्म में कोई कैलकुलेशन अगर इन्वॉल्व हो, लेट अस से सेम थिंग यू कैन एक्सप्लेन in terms of equation also. If I write production function as capital to the power 0.5, labor to the power 0.5, and give you saving rate as 30%, population depreciation rate as 10%, and you have to find the steady state. Find the steady state level of capital. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट प्रोडक्शन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पर वर्कर. सो y by l किया, स्मॉल y इज इक्वल टू दिस विल बिकम k by l टू द पावर 0.5, स्मॉल k टू द पावर 0.5. सो स्मॉल y इज इक्वल टू अंडर रूट k. ये फंक्शन का फॉर्म पहले आ रहा है. ठीक है, एंड देन यू विल सिंपली स्टेट दैट एट स्टेडी स्टेट डेल्टा k इज इक्वल टू 0. डेल्टा k की वैल्यू 0 है. स्टेडी स्टेट पे डेल्टा k की वैल्यू 0 है. और डेल्टा k की जगह क्या लिखना है? इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. इन्वेस्टमेंट की जगह स्मॉल s, y की जगह फंक्शन ऑफ k. 0 करके यहाँ स्टार लगा दीजिएगा. और आगे बताओ फंक्शन की जगह क्या लिख देंगे आप? फंक्शन ऑफ k इज व्हाट? रूट k. So we'll write s root k minus del k equal to 0. अब सेविंग रेट गिवन है 0.3 रूट k स्टार माइनस 0.1 k स्टार इक्वल टू 0. और यहाँ से k स्टार की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, k स्टार इज, सो इफ k स्टार इज 9, तो इस 9 की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे. Therefore y star will be 3. ठीक है,
अब आई स्टार 3 आ गया, तो आपसे अगर पूछे कंजम्पशन पर वर्कर क्या स्टडी स्टेट पे, देन consumption per worker. So what is consumption? Saving rate is how much? 0.3. So what will be the proportion of incomes consumed? 0.7. So your consumption will be 0.7. मतलब जो इक्वेशन लिखा था उसमें हमने क्या लिखा था? स्मॉल c is equal to what? 1 minus s into y लिखा था, तो that will become 0.7. y की जगह ये 3 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 2.1. ठीक है। आप ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आप इसको फेज 1 में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, फेज 2 में ऑल्दो डिस्क्रिप्शन है, तो आप इसको मतलब इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर आंसर, मतलब इट मे हेल्प इन फेज 1 टू सॉल्व करना है इस फॉर्म में, बट आंसर जब आप देख रहे हैं तो इस इक्वेशन की जरूरत नहीं थी। मतलब अगर आप अनेबल हो, डिस्क्राइब नहीं कर पाए, तो आपने सपोर्ट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल में ऐड कर दिया, कंटेंट ऐड करने के लिए। अदरवाइज इफ़ यू नो द कंटेंट, इफ यू आर एबल टू डिस्क्राइब इट, देन नो नीड टू शो इट numerically. Then add on one more part, and that part is basically referring to this diagram, that how savings affect a steady state. क्लियर? मतलब वहाँ तक स्टडी स्टेट कंसेप्ट या सिग्निफिकेंस बताने के बाद आप फर्दर ऐड करते जाओगे। अब कितना ऐड करना है वो डिपेंड करता है कि वेटेज क्या है, टाइम क्या है, और कितने मार्क्स का आप कितना स्कोप आप ऐड कर सकते हो। मतलब आपने स्टडी बता दिया, उसका सिग्निफिकेंस बता दिया, उसको न्यूमेरिकल में समझा दिया, आप उसको बता रहे हैं कि व्हेन स्टडी स्टेट कैन चेंज, तो स्टडी स्टेट कैन चेंज बिकॉज ऑफ सेविंग रेट चेंज, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस ग्रोथ रेट, सो इट विल गो ऑन। तो फर्स्ट पार्ट इज सेविंग. An increase in saving rate imply that amount of investment for any given capital stock is higher. Amount of investment for any given capital stock is higher. Therefore, it shifts saving function upward. जब आप लिख रहे हैं, that means you are referring to basically this diagram. It shifts saving function upward. As a result, at initial steady state, investment will exceed depreciation. So initial steady state is this K star. So now investment is exceeding the depreciation. At initial steady state, investment exceeds depreciation. Due to this, stock of capital increases. However, increase in capital stock is temporary. This is because as economy attains new steady state, there will be no further growth. Therefore, we can say that increase in saving is only causing level effect. Rather temporary growth पहले लिख लीजिएगा, बाद में level effect is only causing temporary growth
but not permanent growth, and underline that, is only causing temporary growth and not permanent growth. Next paragraph. If saving rate is high, then economy will have large capital stock. If saving rate is high, then economy will have large capital stock and higher level of output at a steady state. At higher level of output at a steady state. So, although higher saving rate leads to faster growth, it is only temporary. And it causes only level effect. Rather than growth effect. So you can use this diagram by comparing to different countries also, or same thing can be explained or understood in this way as well. Suppose I said initial saving rate For example, suppose this S1 is 0.2. इकोनॉमी का ये स्टेडी स्टेट है. So this is in the year 2022. If saving rate in this year increases from 20% to 30%, तो अगर सेविंग रेट 20% है, लास्ट 4-5 ईयर से मान लिया 20% है, तो फिर ये आउटपुट की वैल्यू होगी 2022 तक ये वैल्यू रहेगी. Now if in the year of 2022 saving rate increases from 20 to 30%, then what will be the impact? So if it increases from 20 to 30%, then first of all this line will shift up. As this line will shift up, at the same stock of capital, now investment is more. Now due to more investment, stock of capital will increase. Now y is a function of k. So as this k increases, y will also increase. So this output will start rising. Question is, whether it will continue to increase forever? No, it will not continue to increase forever. The stock of capital will increase, but as the stock of capital will increase, depreciation amount will also increase. So economy will gradually comes to a halt once it reaches the new steady state. तो अगर मान लेते हैं कि इस नए स्टेडी स्टेट को अटेन करने में 3 ईयर का गैप आ गया, तो 22 to 23 there was growth, 23 to 24 there was growth, 24 to 25 there was growth. So GDP per capita was rising. But once you are in the year 2025, then onwards what will happen? Then onwards there will be no further change. So we move from one level to a higher level. So there was growth, but it was only temporary, but not the permanent growth. It was temporary but not the permanent growth. तो जब आप बेसिक मॉडल वगैरह एक्सप्लेन करें, देन यू आर सपोज टू एक्सप्लेन इन दिस फॉर्मेट. ये मॉडल आप फर्दर एक्सटेंड करते हुए जाते हैं, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ को ऐड करते हैं, फिर टेक्निकल प्रोग्रेस को ऐड करते हैं. तो जब आपके पास कंप्लीट फॉर्मेट हो जाता है, उस केस में अगर ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव में मिलता है, देन यू हैव इनफ पॉइंट्स टू राइट. फिर आपके पास इनफ पॉइंट्स है. बट अगर क्वेश्चन लिमिटेड है, ओनली बेसिक मॉडल तक उसने लिमिट कर रखा है, इवन देन यू हैव इनफ. आई थिंक व्हाट यू हैव रिटन इज अराउंड 200 or 250 वर्ड्स, वहाँ तक लिख रखा होगा. तो जब आप आंसर लिख रहे हैं तो एग्जैक्टनेस पे ध्यान दीजिएगा. जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा जा रहा है वो बुक का स्टेटमेंट है,
तो आपको बुक के फॉर्मेट में लिखना है, मतलब ट्राई टू यूज लेस एंड लेस योर ओन वर्ड। ज़्यादा नंबर अगर लाने तो अपने वर्ड्स कम अप्लाई करना, मतलब ये कंसेप्ट नहीं बनाना है कि आई नो दिस कंसेप्ट एंड नाउ आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस इन माई ओन वर्ड्स। इस तरीके के एग्जामिनेशन के अंदर उनको बुक का जो लैंग्वेज होता है वही प्रेफर्ड होता है और वहीं पे स्कोर आता है। सो इफ यू वांट टू स्कोर मोर, ट्राई टू राइट एज इट इज, जो इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो ये यहाँ से बेसिकली इस मॉडल के अलग अलग डायमेंशन है। इस डायमेंशन में अभी हमने लेबर को चेंज नहीं किया, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया, प्लस इसके आगे फिर कंटिन्यूटी में आपका गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट है। तो गोल्डन रूल के पार्ट को भी उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, मतलब रिमेनिंग में यू हैव टू चेंज बेसिकली पॉपुलेशन, बिकॉज हमने y एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर लिखा है, a कैपिटल टू द पावर अल्फा, लेबर टू द पावर 1 माइनस अल्फा, बट हमने a और l क्या रखा है अभी, कांस्टेंट रखा है। सो इन दिस सब्सिक्वेंट वी हैव टू चेंज पॉपुलेशन, देन वी हैव टू चेंज टेक्नोलॉजी, बट बिफोर दैट वी हैव टू एक्सप्लेन golden rule of capital, and then you can explain level effect, growth effect, convergence and so on. clear? अब देखिए ये जो जितने टॉपिक है इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ पे स्टार्ट में फर्स्ट क्लास से बिकॉज डिस्क्रिप्टिव का उसमें एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, टाइम की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। तो प्लस आप मतलब यू हैव टू अल्टीमेटली राइट जस्ट 5 क्वेश्चन, बट देयर इज नो एंड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इटसेल्फ वो बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर सकता है। इंटरनेशनल भी अगर आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई विल डू, अ लॉट ऑफ क्लासेस जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस वाली है उसके अंदर काफ़ी डिटेल में रहता है, नोट्स भी रहता है उसका काफ़ी डिटेल में। तो अब कुछ क्लास को बेसिकली हम सप्लीमेंट कर सकते हैं उस गैप को फिल करने के, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट को पूरा करने के लिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अदरवाइज ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई करने का मतलब इट विल दिस इटसेल्फ विल कंज्यूम 2 वीक और मोर देन 2 वीक लेक्चर, मतलब 10-15 क्लास तो आपको ऐसे ही लग जाएंगे। इस 10-15 क्लास को अगर आप शॉर्ट में चाहते हो कि टुडे थर्सडे ऐसे वीकेंड तक ओवर कर लें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक उसको कवर कर लें, तो कुछ लेक्चर्स जो प्रीवियसली रिकॉर्डेड है, ठीक है, वो इसी ईयर के होंगे बट नॉट रिकॉर्डेड एग्जैक्टली फॉर दिस पेपर, इट रिकॉर्डेड फॉर सिविल सर्विस एग्जाम और फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, बट कंटेंट आपका वही है, सेम सोर्स लिखना है, सेम फॉर्मेट में आपको लिखना है। तो जैसे आप ये पहले क्लास होगी, इसके 2 वीडियो अगर मैं कल फर्दर अपलोड कर दूँ, मतलब उसमें बिकॉज वो अवेलेबल है उसमें फिर रिकॉर्ड नहीं करने आपको, तो वो अगर हम फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा सकते हैं, मतलब इन 1 डे वी कैन अपलोड 2 लेक्चर, तो उससे आपका वो कंटेंट थोड़ा फास्ट हो जाएगा और थोड़ा जल्दी आप कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब अगर ये कोई एनुअल मतलब पूरे साल भर की क्लास होती है देन वी हैव इनफ टाइम, बट सिंस इट इज शॉर्ट, टाइम कंस्ट्रेंट आपके लिए ज़्यादा है और फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच में वी विल बी फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन करंट एस्पेक्ट, जो करंट वाला डायमेंशन होगा। तो इन बिटवीन जो मैंने कहा, जैसे इसकी क्लास फर्दर अपलोड भी करते जाएंगे एंड आई विल बी कमिंग इन बिटवीन ऑल्सो टू एक्सप्लेन द न्यू model as well. It is not that all will be uploaded, but for example suppose I started with this solo model, now remaining इसके जो अंदर dimension है, मतलब first class itself is enough to answer the question, जो requirement उससे आपको एक idea लग गया। now remaining part आप उस context में basically ले सकते हैं। then I will come up with the let us say Harrow model initial, then based upon that जो subsequent lecture होगा upload कर दिया, फिर रोमन मॉडल में इनिशियल पार्ट आपको एलिमेंट बताया, जो सेकंड क्लास थी वो अपलोड कर दिया। दैट मीन्स इन बिटवीन, सो दैट यू हैव टू सप्लीमेंट विथ योर करंट रिकॉर्डेड क्लास एज वेल एज द प्रीवियसली रिकॉर्ड क्लास। आई थिंक वो बेटर होगा, और साथ में जो नोट्स होगा वो अपलोड कर देंगे, सो दैट आर्टिस्ट आप नोट्स को आप जल्दी रेफर कर लेंगे। वो काम मैं थोड़ी फास्ट पेस से करा देता हूँ। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सेक्शन है इसको नेक्स्ट वीक तक में ओवर कर लेंगे, दैट मीन्स इन अ वीक। तो 7 डेज टाइम अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगा देते हैं, नेक्स्ट 7 डेज को फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अगर डिवोट कर लें, तो आई थिंक ये 2 सेक्शन एटलीस्ट डिस्क्रिप्टिव का एक सेक्शन आपका हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 1 सेक्शन। तो फिर 1 सेक्शन मतलब 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने के लिए फेज़ 1 के बाद वाला टाइम भी होगा, दैट विल बी इनफ, वो मैनेज हो जाएगा। तो एटलीस्ट वी शुड बी कवरिंग 1 सेक्शन ऑफ दैट डिस्क्रिप्टिव, दैट मीन्स 50%, और अगर 3 क्वेश्चन कर रहे हैं यू कैन से 60%, because you have always a choice
टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन इन दैट सेक्शन। तो अगर थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे तो हो सकता है 3 क्वेश्चन यहीं से हो जाए, फिर आपको करंट थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज करंट के साथ एक इशू है, कितने क्वेश्चन आप कवर करोगे, थोड़ा इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। दीज टाइप ऑफ मॉडल्स आर वेल डिफाइंड, एग्जैक्ट सोर्सेज अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है, वीडियोज अवेलेबल है, वो आप देख करके कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो यहाँ से क्लास फर्दर ये रिकॉर्डेड वाली जो पहले होगी, अभी 1-2 क्लास अपलोड हो जाएगी, मैं स्टार्ट वाली क्लास पे नए मॉडल के साथ करता जाऊँगा इन बिटवीन, क्लियर। और टेस्ट वगैरह जो लिखना है, आई थिंक 1 टेस्ट फेज़ 2 का हुआ था, जिस फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने के लिए। रिमेनिंग जो फेज़ 2 के टेस्ट है वो आपके फेज़ 1 के एग्जाम के बाद ही है थी, ठीक है। तो फेज़ 1 को थोड़ा ध्यान से रखना है। कुछ क्लास आई विल सजेस्ट कि 2-3 क्लास और लगा करके फेज़ 1 के और एडिशनल प्रॉब्लम्स कर लीजिए, बिकॉज फेज़ 1 बहुत क्रिटिकल है, मतलब वो एक टाइप ऑफ हर्डल है फर्स्ट, तो फर्स्ट हर्डल क्लियर करना आपके लिए जरूरी है। तो कुछ क्लास 1-2 अगर लगा करके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करने हैं, कुछ और करने हैं, तो वो 2-3 क्लास और ऐड कर सकते हैं, बट ये कंटिन्यू रहेगा ऐसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, ठीक है। चलो, थैंक यू।